Vaibhav Krishna from Inspired by Dream Foundation, and today with me is the Shivangi ma'am from SOCH and the Pranam. Welcome, ma'am. Thank you for giving us your time. So, थैंक ma'am, यू सो मच फॉर दैट। how did you started this foundation? फ्रॉम चाइल्डहुड मुझे हमेशा से ही दूसरों की हेल्प करना पसंद था। बट देन हम हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी से इंस्पायर होते हैं, राइट? एंड दिस इज व्हाट हैपेंड विद मी जब मैंने बचपन में मूवी देखी अवतार। तो इफ एनीवन हैज वॉच्ड इट, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मास्टरपीस ऑफ राजेश खन्ना जी। उनकी ये मूवी है। एंड इस मूवी में बेसिकली एक छोटा सा जस्ट मैं देती हूँ। उसमें ये होता है कि मिडल ऑफ द स्टोरी में उनके बच्चे उन्हें निकाल देते हैं घर से। And then he and his wife really worked very hard and then they built an empire. So कुछ टाइम के बाद वो मिलने जाते हैं अपने एक फ्रेंड से, एंड उनके साथ भी ऐसे ही हो रहा होता है, उनके बच्चे उन्हें घर से निकाल रहे होते हैं। सो उस पॉइंट पे वो ये सोचते हैं कि मेरे जैसे कितने सारे ऐसे लोग होंगे, बट हो सकता है कि वो मेरे जैसे अपने पैरों पे ना खड़े हो पाए, एंड देन दे फॉल अपार्ट, राइट? सो उस टाइम पे वो और उनकी वाइफ एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं विच इज अपना घर। तो अपना घर में जितने भी ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिनके बच्चे उन्हें निकाल देते हैं, वो उन्हें लेकर आते थे और उन्हें कुछ ना कुछ चीजें सिखाते थे या काम देते थे, जैसे कि कपड़े सिलना, है ना, इसका काम। तो बेसिकली जो जिसमें अच्छा होता था वो चीजें करवा के दे यूज टू पे देम। एंड एज अ चाइल्ड आई यूज टू थिंक कि वाओ, दिस इज अ गुड कॉन्सेप्ट। बट व्हाट वी कैन डू इन दिस इज हम ऑर्फनेजेस और ओल्ड एज होम्स का कोलैबोरेशन कर सकते हैं। एंड ड्यूरिंग दैट कोलैबोरेशन द बेस्ट पार्ट इज कि बच्चों को पेरेंट्स मिल जाएंगे एंड पेरेंट्स को बच्चे। बट एज ए किड आई हैड नो आइडिया कि इसमें कितना पैसा चाहिए होगा, कितनी जमीन चाहिए होगी टू बिल्ड दैट एंटायर अपना घर। And so, with time, I grew up, and then this idea of starting something of my own take a back seat. और बिल्कुल ही ऐसा हो गया कि नहीं, कुछ करा ही नहीं इससे रिलेटेड। बट हाँ, ऑन एंड ऑफ आई हैव डन लॉट ऑफ थिंग्स ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड ऑल्सो, लाइक बच्चों को पढ़ाना अपने घर के आसपास, अपनी हाउस हेल्प के बच्चों को पढ़ाना। So when I started my engineering, that period of time I thought कि no, something can be done, but again had no idea, और शायद कोशिश भी नहीं करी उस समय पर। बट व्हेन आई स्टार्टेड माय जॉब एज ए एसक्यूएल डेवलपर इन गुड़गांव, उस पीरियड ऑफ टाइम पे आई रियलाइज कि नो, आई वांट टू यूटिलाइज माय टाइम, एटलीस्ट माय वीकेंड्स, ऑन समथिंग दैट आई एम वेरी पैशनेट अबाउट। So I started visiting NGOs and then doing some kind of social drives, जैसे कि बच्चों को अगर किसी चीज की जरूरत है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके उन्हें दे आना, ओल्ड एज होम्स में विजिट करना, साइड रोड साइड अगर लोग हैं उनकी हेल्प करना। बट देन आई वांटेड टू वॉलंटियर एज विद सम ऑर्गेनाइजेशन, एंड आई हैव अप्लाइड ऑनेस्टली। बहुत जगह पे अप्लाई करा, बट आई डोंट नो इफ इट्स फॉर्चुनेट और नॉट फॉर्चुनेट। मुझे सिलेक्शन मिला ही नहीं, मतलब किसी ने भी मुझे सेलेक्ट ही नहीं करा एज ए वॉलंटियर भी। though I was completely ready to spend my time and then help people as much as I can, but selection ही नहीं हुआ। So उस point of time पे I thought कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो why not to start something of your own। आप खुद से ही कुछ शुरू कर दो, है ना। तो उस समय पे मैंने और मेरी एक फ्रेंड है, उसने स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने हमारे पीजी के पास में बच्चे होते थे, उन्हें पढ़ाना शुरू करा था। सो दिस इज हाउ सोच गॉट रिबॉर्न। Okay, that's nice. अच्छा हुआ कि आपको कहीं सिलेक्ट नहीं करा, वरना फिर ये सोच शुरू नहीं हो पाती. हाँ, एग्जैक्टली। सो Yeah. समटाइम्स आई फील कि लाइफ में हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं एंड वी हाँ. फील बैड अबाउट इट। तो वी ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद यू रियलाइज कि शायद वो अच्छे के लिए ही हुआ। अगर वैसा हाँ. होता तो मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन कभी शुरू नहीं करी होती। उस टाइम पे वो जरूरी लगता है, बट फिर देन लेटर वी रियलाइज कि नहीं यार, उतना जरूरी था भी नहीं वो. That's how it is. Yes, completely. Yeah. So ma'am, what difficulties did you face in the starting? Like, क्या दिक्कत आप लोग को आई? Difficulties was like I am belonging from an engineering background. Okay. Okay, so no idea about how to build an organization. बाहर से अगर कोई देखता है ना तो उसे लगता है कि यार इसमें है ही क्या, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। बट देन डूइंग समथिंग ऑन योर बर्थडेज और एनिवर्सरीज इज समथिंग डिफरेंट। कि Hmm. आपका मन था एंड आपने आउट ऑफ काइंडनेस अपनी बर्थडे और एनिवर्सरी पे लोगों की हेल्प करी। But then doing something as a full time or taking it as a full time and then building an organization is altogether a different thing. So True. registrations karana,
या फिर एक बेनिफिशियरी सेलेक्ट करना, लोगों की हेल्प करना, और वॉलंटियर्स को लेकर आना, दैट टू नॉट जस्ट ऑन वीकेंड बट ऑन अ परमानेंट बेसिस फॉर लाइक 3 months, 6 months or 1 month. It's altogether a very hectic and very important thing that one needs to do during creating an organization. So problem सबसे बड़ी यही थी कि मुझे कुछ नहीं पता था, जीरो आइडिया था, नॉलेज जीरो थी. तो बहुत लोगों से बात करके इधर उधर से कि अच्छा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, बहुत सारी चीजें ट्राई करके फेल होके, प्रोसेसेस क्रिएट करके, एक एक दो दो तीन तीन महीने लग जाते थे प्रोसेस क्रिएट करने में, और 3 महीने बाद पता चलता था अरे शिट ऐसे नहीं होना, ये गलत है. तो फिर रीवर्किंग करके, तो ऐसे मतलब ये डिफिकल्टीज थी. बाकी थोड़ा इनिशियली ये भी था कि पीपल वर नॉट दैट सपोर्टिव ऑफ दिस डिसीजन ऑफ क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि क्या होता है ना, योर पेरेंट्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, जो आपका एक सर्किल होता है, दे एक्सपेक्ट यू टू बिहेव लाइक इन अ सर्टेन वे, राइट. एंड जो इंजीनियरिंग करे हुए लोग हैं आज मेरे ही साथ के लोग, दे आर अर्निंग वेरी वेल. एंड देन व्हेन आई डिसाइडेड कि नो, आई वांटेड टू क्विट माय जॉब व्हिच इज पेइंग मी रियली गुड राइट नाउ, एंड देन वांटेड टू टेक दिस फुल टाइम, वाज अ वेरी टफ डिसीजन एक्चुअली. तो उस समय पे बहुत प्रॉब्लम आई, क्योंकि सबको ये रहता है भाई इतनी पढ़ाई करी है, अब इसका क्या होगा, कहाँ यूटिलाइज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बिल्कुल ऑल टुगेदर प्रोफेशन चेंज कर दिया. तो ये प्रॉब्लम्स थी, बट सारी प्रॉब्लम्स अच्छी ही थी एक्चुअली. सबने कुछ ना कुछ सिखाया ही है. It's all part of the journey. या इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी. True. So मैम, आप किधर हेल्प कर रहे हो लोगों को, ऑर्फनेज एंड ओल्ड एज होम, या फिर और भी कुछ करते हो आप लोग? नहीं, वी हैव एक्चुअली वर्कड ऑन मल्टीपल बेनिफिशरीज एंड स्पेक्ट्रम्स. हमने बच्चों के लिए भी काम किया है, ओल्ड एज पीपल के लिए भी काम किया है, कोविड में हमने बहुत काम किया था. एंड पिछले एक एक दो साल में हमने एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी के लिए भी बहुत काम किया है. बट देन एक सर्टेन पोजीशन पे पहुंचने के बाद आपको रियलाइज होता है ना, यू वांटेड टू डू समथिंग दैट यू कैन टेक इट फॉर मेनी इयर्स, राइट. So उस टाइम पे we have researched as an organization a lot, like what we can do, what are the problems. So we have worked with government school children a lot. पिछले 1-1.5 साल से हम कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के साथ काम कर रहे हैं. वी प्रोवाइड वर्कशॉप्स ओवर देयर. हम वहाँ पे गुड टच, बैड टच, एंटी बुलिंग और क्लीनलीनेस, हाइजीन, पीरियड्स, इन सब पे हम वर्कशॉप्स देते हैं बच्चों को, उन्हें अवेयर करते हैं बेसिकली. एंड ड्यूरिंग दैट कोर्स ऑफ टाइम वी रियलाइज दैट देयर इज समथिंग मोर वी कैन डू एज इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. So, identifying the problems and the gaps, we realize that digital education is something that can help the students from the government school to enhance their proficiency and get them ready for 21st century. So, पिछले कई टाइम से, हम कई महीनों से इसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें वी आर प्रोवाइडिंग देम कंप्यूटर एजुकेशन. Also, for 10th to 12th class students, we are building something very important and very creative, which is to bring in job oriented courses, so that 12th के बाद अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन नहीं भी कर पा रहा है ड्यू टू एनी फाइनेंशियल क्रंच, तो वो इतना स्टेबल्ड होगा, उसे इतनी नॉलेज होगी, वो इतना सर्टिफाइड होगा कि वो कहीं पे जॉब कर सकता है साथ की साथ. एंड देन मे बी कैन, यू नो, जब अब वो अपना खुद का अर्न करना स्टार्ट कर दे, देन द स्टूडेंट कैन like go for any graduation courses like BCom or BA to get them educated rather than doing some odd jobs because of any financial problems. Yes. So this is something that we do. Okay. So, Yeah. ma'am, can you brief about how you help the LGBTQ community? Like, not many NGOs, not many people get into it, but you have. So, can you brief us about it? Yeah, sure. So LGBTQ community is one of the community which is very closest to my heart, because I have always believed in one thing, that they have been marginalized from many years. Yeah. And the best part is कि उनकी कोई गलती भी नहीं है, right? अभी आपको ब्लू कलर पसंद है और ग्रीन नहीं पसंद, इसमें किसी की गलती थोड़ी ना होती है, ये अपना मन होता है. नाउ इफ यू फोर्स समबडी टू नो यू हैव टू वेयर ग्रीन ऑल द टाइम, देन ये आपको लगेगा ना कि यार मेरा मन, मुझे जो करना है वो करने दो, इसमें इतना फोर्स क्यों करना. सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग विद द कम्युनिटी एज वेल. And while we have started working with community, we have helped a lot of people to become an ally. Ally is somebody who is
a confident, a friend, somebody who understands you, right? So बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है कम्युनिटी के बारे में, तो हम लोगों ने नॉलेज स्प्रेड करी, हमने कॉर्पोरेट्स में वर्कशॉप कराई हैं, कॉलेजेस में कराई हैं, स्कूल्स में भी कराई हैं। इनफैक्ट अभी वी आर हैविंग वन वर्कशॉप इन आईटी दिल्ली ऑन अप्रैल. So we do these kind of workshops to help a lot of people to understand about community. And रही बात community members की, so we have provided them an open opportunities to work with the organization, with our organization obviously, कि वो यहाँ पर आए और जो भी skills में वो सीखना चाहते हैं, like we do work on management basis, we do work on field work, we do a lot of computer based work. तो जो जिस भी चीज में आपको इंटरेस्ट है, आप आओ, सीखो और अपने आप को ग्रो करो. उसके साथ साथ वी हैव एम्प्लॉयड फ्यू ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स इन वेरियस कंपनीज, एंड दैट प्रोबेबली हैज हेल्प्ड देम टू हैव अ स्टेबल लाइफ नाउ. So this is something that we have done. Yeah, that's really amazing because as far as I have known, not many people get into it, but since you have, it's really great. It's amazing. So what are your Yeah, it's a future? beautiful community. People should get into it. People Yes, should help obviously. them. Yeah. So what are your future plans, ma'am, with your NGO? So see, we have made a lot of changes in past 1.5 year. We have changed the entire beneficiary of the organization, and which we are kind of very happy and proud about it. So do you hire volunteers as well, and what is the procedure for it? So for volunteership, it's something that we do on a very critical basis. Like we identify the gaps in the organization. For example, we are in need of somebody who can do graphic designing, right? Or we need somebody who can do on-field work. So first of all, what we do is we identify the needs of the organization, and then we open certain opportunities like graphic designer or on-field volunteer or HR management में हमें कुछ चाहिए तो HR volunteer, R&D volunteer. So this is how we open the opportunities, and then we have this Google form through which we evaluate the volunteers responses. तो उसमें हम बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उनकी उनकी डिजायर भी हमें पता चलती है कि भाई why they wanted to work for this community or for working for any organization. And फिर हम उसे रोल आउट कर देते हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, इंटरनली हम उसको स्प्रेड करते हैं. सो विद सोच देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर्किंग, सो कॉलेजेस के ग्रुप्स में वो स्प्रेड आउट होता है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर वर्किंग फ्रॉम कॉर्पोरेट्स, तो उनके ग्रुप्स में सर्कुलेट होता है. And this is how a lot of people fill that form, and then we evaluate on our end, and then do their telephonic interview. So once everybody gets selected, we do the induction. This is how we work. So where do you post this Google form, like your social media platform or anywhere else? Yes. So internally and externally both. Internally, when I say, is like internal communication, like Yeah. asking all the team members to share with their connections. So कई बार ऐसा भी हुआ है कि हमारी टीम में कोई आया और फिर उनके cousins भी आए हैं. तो वो social media से नहीं, वो internal communication से आए हैं. But हाँ, we do externally post it, like we do post it on Instagram, on Facebook, on LinkedIn, and on our WhatsApp links as well. तो वहां पे भी स्टेटस पे जाता है, तो वहां से भी बहुत सारे लोग फॉर्म फिल करते हैं. Final question is that, is there any message that you want to give to this community, society? Society in general is one thing that I would want to say is there is no money needed to be an empathetic person or to be kind actually. Anytime I was when I was in my college or in my younger age, I used to feel कि अरे यार पैसा नहीं है तो मैं काम नहीं कर सकती, मैं ऑर्गेनाइजेशन नहीं स्टार्ट कर सकती, मैं लोगों की मदद नहीं कर सकती. बट द बेस्ट पार्ट इज यू कैन ऑलवेज हेल्प एनीवन. Yes. आपके पास अगर आप महीने का 1,000 रुपए कमाते हो तो आप उसमें से 100 रुपए की हेल्प कर दो, राइट? सो एनी अमाउंट दैट यू वांट टू हेल्प, और अगर पैसे नहीं भी लगाने ना, तब भी यू कैन हेल्प. स्टार्ट एजुकेटिंग योर हाउस हेल्प किड्स or do anything that can help somebody. You can start by donating your clothes or your accessories that you probably do not use anymore but can be reused by somebody. So आप ऐसी चीजों में हेल्प कर सकते हो. सड़क पे अभी कभी आपको कोई मिल जाए, जैसे जरूरत है, भूखा है कोई बहुत ज्यादा, तो आप उसे खाना खिला दो. तो इट्स लाइक छोटी छोटी चीजें भी आप कर सकते हो. डोंट नीड टू बी मिलियनेयर टू स्टार्ट kindness on anywhere. So this is something that I would want to convey. Yeah. It was a pleasure talking to you, and I wish you all the best to you and your teammates.
You're doing really amazing job. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, Vibha.